चलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, चालू करेंगे। कल हम मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन में थे और हमें एक पॉइंट हमने देखा था कि भाई मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। मोड्स ऑफ एक्सक्रीशंस आर डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कितना मात्रा में वाटर अवेलेबल है, दैट इज डिटरमाइन द मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन। जिसमें हमने बेसिक पहला मोड पढ़ा था अमोनोटेलिज्म। द फर्स्ट मोड वी स्टडी इज अबाउट अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म ये मोड पढ़ा था, अमोनोटेलिज्म। एंड दैट अमोनोटेलिज्म पढ़ता ऐसा रहता। ओके चलो भाई, ammonotelism, the removal of nitrogenous waste in the form of ammonia is called as ammonotelism. And ammonotelism is a ammonia is very basic and highly toxic type of nitrogenous waste. ammonia formation को process को क्या कहते हैं हम? Deamination. क्या कहेंगे उसको हम? Deamination. और kidney plays minor role. Kidney plays minor role in the removal of ammonia. क्योंकि वाटर का कंजर्वेशन नहीं करना है, वाटर को हमें क्या करना है? रिमूव करना है। अब देखो फॉर एग्जांपल अमोनोटेलिक के कुछ पॉइंट्स आगे बढ़ाते हैं। दैट इज अमीबा। अमीबा अमीबा एंड हाइड्रा। अमीबा एंड हाइड्रा, लक्ष्यदार है। अमीबा एंड हाइड्रा removes ammonia. Amoeba and hydra removes ammonia from their body surface. उनके बॉडी सरफेस से अमोनिया को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। दे रिमूव द अमोनिया फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस by simple diffusion. और ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है दोस्तों? Why it is possible by simple diffusion? क्योंकि अमोनिया is radially soluble in water. As it radially soluble in water, it quickly diffusible. Quickly क्या हो जाएगा? Diffuse हो जाएगा from its higher concentration to its lower concentration. Okay, so एक simple diffusion से अमीबा और हाइड्रा जैसे एनिमल्स में, अमीबा एंड हाइड्रा, there is a removal of the what? Ammonia. और एक पॉइंट है देखो, प्लैनेरिया वर्म। हमारा कौन सा वर्म? प्लैनेरिया। इन प्लैनेरिया कौन है? प्लाटी हेलमेंथिस है हमारा प्लैनेरिया वर्म। देन अर्थवर्म, एनेलिड्स, अर्थवर्म, tadpole larva of frog, tadpole of frog, larva of frog, tadpole larva of frog, आणि अजून एक उदाहरण होतं tadpole larva of frog and salamander. क्या होता है इनमें? अमोनिया removed through यूरिन। इनमें अमोनिया का रिमूवल किसके द्वारा होता है? यूरिन। द रिमूवल ऑफ अमोनिया बाय द व्हाट? यूरिन इज देयर। यूरिन से रिमूव होता है। अमीबा, पैरामीशियम जैसे एनिमल्स में, सॉरी ऑर्गेनिज्म जो प्रोटोजोन्स है हमारे, हाइड्रा, सिलेंट्रेट वाले, इनमें बॉडी सरफेस के निकल जाता है बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। प्लैनेरिया, अर्थवर्म, टैडपोल ऑफ फ्रॉग, सैलेमेंडर, अमोनिया रिमूव थ्रू द व्हाट? यूरिन। यूरिन थ्रू अमोनिया का क्या होता है? रिमूवल होता है। ओके, तो कल हमने एक पार्ट देखा था। अब सेकंड मोड ऑफ एक्सक्रीशन, यूरियोटेलिज्म। यस, वी गो फॉर सेकंड मोड ऑफ एक्सक्रीशन। हम सेकंड मोड ऑफ एक्सक्रीशन की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज यूरियोटेलिज्म। So my friend, what is the ureotelism? Removal of the process of excretion in which, हाँ बोलिए, nitrogenous waste, the process of excretion in which nitrogenous waste is removed
nitrogenous waste removed in the form of urea, removed in the form of urea, known as ureotelism, known as, क्या कहेंगे भाई उसको हम, ureotelism, ureotelism. Okay, the mode of excretion, the mode of the क्या है, excretion in which nitrogenous waste हम क्या कर रहे हैं, remove कर रहे हैं, removal of nitrogenous waste in the form of urea. कल किसके फिर क्या था, ammonia. Now we remove in the form of urea. यूरिया के फॉर्म में रिमूव करना, it is called as ureotelism. And बताइए, such animals are known as ureotelic animals. Animals are known as ureotelic animals. Known as ureotelic animals. Ureotelic animals are there. जैसे ऐसा भी क्वेश्चन बहुत पूछते थे, मैच द पेयर, अम्नोटेलिज्म, अम्नोटेलिक एनिमल, अम्नोटेलिज्म, अम्नोटेलिक, यूरियोटेलिज्म, यूरियोटेलिक. यूरियोटेलिज्म को क्या कहेंगे हम, यूरियोटेलिक इज देयर. अब अगर हम एग्जांपल लेंगे यूरियोटेलिज्म के दोस्तों, यूरियोटेलिक एनिमल्स, तो यूरियोटेलिक एनिमल्स में कौन आएंगे, हमारे टेरिस्ट्रियल मैमल्स. मैमल्स तो हमारे टेरिस्ट्रियल रहने ही है. मैमल्स, yes, these are mammals including humans, including the what, humans, including humans, यानी ourselves also, we are, कौन है हम, we are ureotelic, we are the क्या है, ureotelic mammals including the क्या है, humans. Then next one, terrestrial, terrestrial amphibians, amphibians, terrestrial amphibians, that is adult frog, adult frog, terrestrial amphibian, क्या कहेंगे भाई उसको हम, adult frog. ये भी यूरियोटेलिक एनिमल है. कौन सा एनिमल है, यूरियोटेलिक. लेकिन उसकी लार्वा क्या है, अम्नोटेलिक है. ये क्वेश्चन पढ़ेंगे हम. टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग इज अ अम्नोटेलिक. टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग इज अ अम्नोटेलिक एंड अडल्ट इज अ यूरियोटेलिक. टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग अम्नोटेलिक, एंड अडल्ट कौन है, यूरियोटेलिक इज देयर. ओके, देन यस, अगेन वी गो फॉर सर्टेन का एग्जांपल. देखो, mammals including the what, humans, mammals including humans, terrestrial amphibians, adult, even mammals मध्ये humans है, camel, हमारा desert mammal like the what, camel, इसका भी बहुत बार रेफरेंस आने वाला है. ये भी हमारा यूरोटेलिक ही एनिमल है, यूरोटेलिक एनिमल है. इवन कैमल के किडनी में कुछ मात्रा में यूरिया को स्टोर किया जाता है. इवन हमारे किडनी में भी स्मॉल एक्सटेंट यूरिया इज गेट स्टोर्ड इनटू किडनी फॉर ऑस्मोलैरिटी, मेंटेनेंस ऑफ द काय, ऑस्मोलैरिटी. ये हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन ये मैकेनिज्म में पढ़ने को मिलेगा. ओके, तो यूरिया, टेरिस्ट्रियल एम्फिबियंस, दैट इज अडल्ट फ्रॉग. त्यानंतर मराइन वॉटर कार्टिलेजिनस फिशेस, मराइन वॉटर, मराइन वॉटर कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस. ओके, कार्टिलेजिनस फिशेस like shark and rays, shark आणि काय, rays, shark आणि काय, rays, shark and rays, they are also ureotelic. वो भी क्या है, ureotelic. shark and rays are also ureotelic. terrestrial amphibian तो ही है, mammals है, ureotelic animal. कौन सा animal, ureotelic, where they remove the काय, urea, remove the what, urea. आता for example बघा, in these animals urea, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कहां पे होता है दोस्तों, बताइए. फॉर्मेशन ऑफ यूरिया हो गया ना हमारा पॉइंट. फॉर्मेशन ऑफ यूरिया जनरली कहां पे फॉर्म होता है, लिवर. ओके, जनरली ऑकर्स इन का है, लिवर, लिवर में होता है. कहां पे होता है, लिवर. बताइए, लिवर के सेल को क्या कहेंगे भाई हम, हेपेटोसाइट्स. द सेल्स ऑफ लिवर्स आर कॉल्ड एज हेपेटोसाइट्स. कहां पे होता है, लिवर. बाय विच साइकिल, बाय कौन सी साइकिल, बाय ऑर्निथिन साइकिल. यस, ऑर्निथिन साइकिल. यस, इसके ऊपर भी स्टार करके लिखता हूं क्योंकि ये भी हमें डिटेल आगे पढ़नी है. इन मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा की हाउ द ऑर्निथिन सायकल इज गोइंग ऑन. प्रत्यक्षामध्ये ही सायकल माइटोकॉन्ड्रिया मध्ये होती. कशामध्ये, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हिपॅटोसाइट. हिपॅटोसाइट म्हणजे काय रे, सेल्स ऑफ लिवर को हम हिपैटोसाइट कहते हैं, सेल्स ऑफ लिवर. इस हिपैटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रेब्स हैंसलेट साइकिल. हमारा सर हैंस क्रेब साइकिल वाला, जिन्होंने क्रेब साइकिल इन्वेंट की है, रेस्पिरेशन वाली, एरोबिक रेस्पिरेशन. क्रेब एंड हैंसलेट, क्रेब्स एंड हैंसलेट, they
discovered this cycle called as which cycle? Ornithine cycle. Formation of urea is by which cycle? Ornithine cycle. याद रखिए, that is liver में. And from liver ये यूरिया जो है लिवर से यूरिया कहां पे आता है? That is यूरिया enters into what? Blood. कहां से आता है? Blood. And blood से enter into what? Kidney. और किडनी में फिल्ट्रेशन होके रिमूव किया जाता है. इन किडनी व्हाट इज गोइंग ऑन? फिल्ट्रेशन. किडनी में उसका फिल्ट्रेशन होता है एंड आफ्टर फिल्ट्रेशन इट गेट रिमूव्ड. उसके बाद उसका क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन. आफ्टर फिल्ट्रेशन इट अंडरगो एलिमिनेशन. क्या कहते हैं उसको हम? एलिमिनेशन. इज देयर. एलिमिनेशन हो जाता है. तो वी आर यूरियोटेलिक. आज भी हमारी 80% नाइट्रोजनस वेस्ट कोणत्या फॉर्म में असते? यूरिया. वी रिमूव अवर नाइट्रोजनस वेस्ट 80% नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ युरिया. कोणत्या फॉर्म मध्ये रिमूव्ह करतो आपण? युरियाच्या फॉर्म मध्ये रिमूव्ह करतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज युरियोटेलिक. काय म्हणतो आपण त्याला? युरियोटेलिक एनिमल्स. कोणते एनिमल्स? युरियोटेलिक एनिमल्स आर देयर. ओके. आणि युरिया फॉर्मेशन कशी होते आपण पुढे डिटेल बघू बा. 2 अमोनियाचे मॉलिक्यूल आणि एक CO2. 2 अमोनियाचे मॉलिक्यूल आणि काय? CO2. इट रिक्वायर्ड एनर्जी बॉयज. ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर सेल में हो रही है प्रोसेस. एनर्जी एंड एक वन एंजाइम है आर्जिनेज नाम का. ओके. एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ NH2CO NH2. इस NH2CO NH2 को ही हम क्या कहते हैं? यूरिया. एंड ये जो रिएक्शन है, ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस का ही नाम है कौन सी साइकिल? ऑर्निथिन साइकिल. ऑर्निथिन साइकिल, उसके स्टेप्स वगैरह है, वी विल लर्न इन नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में हम उसको डिटेल पढ़ेंगे. ऑर्निथिन साइकिल है. ऑर्निथिन साइकिल से क्या फॉर्म होता है? यूरिया. यूरिया इज अ फॉर्म्ड. वो ब्लड में आएगा, ब्लड से फिर किडनी की तरफ जाएगा फॉर फिल्ट्रेशन एंड देन फिल्ट्रेशन उसको बॉडी से क्या किया जाता है? इलिमिनेट. क्या किया जाता है? इलिमिनेट. इज ओके. और एक पॉइंट आपको याद रखना है, देखिए उसके बाद हम जाएंगे. ये था क्या? फॉर्मेशन ऑफ द व्हाट? यूरिया. फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, लिवर, हेपेटोसाइट, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हेपेटोसाइट, ऑर्निथिन साइकिल. देन फ्रॉम लिवर यूरिया एंटर इनटू ब्लड. ब्लड से कहा जाएगा? किडनी में आफ्टर फिल्ट्रेशन क्या किया जाएगा? एलिमिनेशन. त्यामुळे आपण पुढे बघणार आहोत बघा की हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा यूरिया कौन सी वेन कैरी करती है? हेपॅटिक वेन. कोणती वेन? हेपॅटिक वेन. द वेन विच कम फ्रॉम लिवर, त्याला काय म्हणतात? हेपॅटिक वेन कॅरीज मॅक्सिमम अमाउंट ऑफ युरिया. लक्षात तुमच्या, हिपॅटिक वेन. कोणती वेन? हिपॅटिक वेन. ती कुठून येते? लिव्हर कडनं. आणि सगळ्यात कमी युरिया कोण असेल? रिनल वेन, जी किडनीतून बाहेर पडते. कारण काय होणार आहे? एलिमिनेशन, फिल्ट्रेशन. ओके. त्यामुळे पॉइंट टू बी नोटेड तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. हिपॅटिक वेन कॅरीज मॅक्सिमम यूरिया. यस, ये हिपैटिक वेन ही है हमारे बॉडी में जो मैक्सिमम क्या कैरी करती है? यूरिया. क्योंकि यूरिया फॉर्मेशन ही कहां चल रहा है मित्रों? लिवर में. यूरिया फॉर्मेशन ऑकर इन लिवर. तो लिवर से जो वेन निकलेंगे उसको क्या करेंगे हम? हिपैटिक वेन. अब वेनच का हमने डिफाइन किया ना वेन का. व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वेन? द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम ऑर्गन. जो ब्लड वेसल अवे फ्रॉम ऑर्गन ब्लड कैरी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वेन्स. ठीक है. वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, कुछ ऑक्सीजनेटेड कैरी करेंगे. लेकिन व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वेन? द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वेन इज द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम ऑर्गन्स. ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम ऑर्गन आर नोन एज द व्हाट? वेन्स. क्या कहते हैं उसको हम? वेन. हिपैटिक वेन कैरी मैक्सिमम यूरिया. एंड देन उसके अपोजिट में दोस्तों रीनल वेन कैरीज लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया. हमारे बॉडी में लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया कैरी करने का काम, कौन करती है? रीनल वेन. और रीनल वेन कहां से निकलती है भाई? पढ़ेंगे हम. किडनी. आफ्टर द फिल्ट्रेशन. आफ्टर द विच प्रोसेस? फिल्ट्रेशन. इधर. सो लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया. फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्ट. समझ में आप लोगों को? फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्ट. एक बार एआईपीएमटी में ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिया फ्रॉम लिवर टू किडनी फॉर एलिमिनेशन. ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिया फ्रॉम लिवर टू किडनी फॉर एलिमिनेशन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन में ब्लड भी था, प्लाज्मा था, आरबीसी थे या अदर कंपोनेंट. लक्षात द्या, अदर कंपोनेंट. मला प्लीज लक्षात द्या. ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिया, ट्रांसपोर्ट ऑफ द काय? यूरिया फ्रॉम लिवर टू किडनी.
फ्रॉम लिव्हर टू किडनी कशा थ्रू होईल ब्लड आणि प्लास्मा एक ऑप्शन ब्लड आहे एक ऑप्शन प्लाज्मा है एक ऑप्शन आरबीसी है एक ऑप्शन अदर कुछ है व्हाट इज योर आंसर ब्लड है पर ब्लड में से कौन प्लाज्मा एक्चुअली इसका ट्रांसपोर्ट कहां पे होता है प्लाज्मा और हमें पढ़ना है ये प्लाज्मा ही है विच अंडरगो फिल्ट्रेशन इज अंडरगो दी का है फिल्ट्रेशन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लाज्मा यानी ब्लड में एक्चुअली कौन है ये प्लाज्मा ये लिक्विड पार्ट जो इसका ट्रांसपोर्ट करेगा किसमें किडनी फॉर विच पर्पज फिल्ट्रेशन इज देयर फॉर विच पर्पज फिल्ट्रेशन मला अजून आठवतं हमने ब्लड के फंक्शन देखे थे वी सी द फंक्शन ऑफ द का है ब्लड वहां पे हमने लिखा था ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट इंट्रासेलुलर वेस्ट वो ट्रांसपोर्ट ऑफ इंट्रासेलुलर वेस्ट किसके द्वारा हो रहा है प्लाज्मा इट इज थ्रू दी व्हाट प्लाज्मा इज देयर इज इट क्लियर सो हेपेटिक वेन कैरी मैक्सिमम यूरिया रिनल वेन कैरी लीस्ट यूरिया क्योंकि फिल्ट्रेशन होता है क्या होता है फिल्ट्रेशन इज देयर ओके सो अमोनिया प्लस CO2 gives rise the what यूरिया gives rise the यूरिया फॉर्मेशन ऑफ यूरिया अब देखो दोस्तों इसके टॉक्सिसिटी की बात करेंगे हम when we talk about the टॉक्सिसिटी इज देयर उसके बाद आपको इसके एडाप्टेशन पता चल जाएगा टॉक्सिसिटी देखो यूरिया इज 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक than ammonia less toxic than the what ammonia ammonia से 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक है 1 लाख टाइम म्हणजे बघा ना कहा अमोनिया हाईली बेसिक एंड वेरी डेंजरस टॉक्सिक हाईली बेसिक एंड वेरी टॉक्सिक इज देयर एंड कहा यूरिया वो कितने टाइम 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक है 1 लाख टाइम लेस ठीक है हार्मफुल वेस्ट है लेकिन त्यातल्या त्यात 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक आहे कोणापासून अमोनियापेक्षा याचा अर्थ तुम्ही काय परसेप्शन घ्याल याचं व्हाट इज युअर इंटरप्रिटेशन इसका हम क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे कि भाई जैसे अमोनिया फॉर्म होता है इसका रिमोल नेसेसरी है क्विक रिमोल ऑफ अमोनिया इज वेरी नेसेसरी लक्षात ठेवा मी तुम्हाला काय सांगतो क्विक रिमोल ऑफ अमोनिया इज नेसेसरी बिकॉज इट इज अ वेरी हाईली टॉक्सिक टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट क्योंकि उसको हमें स्टोर करना ही नहीं है क्विकली रिमूव करना है पॉइजनिंग कॉज कर सकती है अदर इफेक्ट हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकते हैं हमें उसको क्विक रिमूव करना है उसको हमें क्विक क्या करना है रिमूव करना है किसको भाई अमोनिया को लेकिन यूरिया फॉर्म होने के बाद अमोनिया से यूरिया का कन्वर्शन 1 लाख टाइम क्या बनाता है लेस टॉक्सिक यानी कुछ समय के लिए अगर यूरिया स्टोर रहता है तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या नहीं है जैसे अमोनिया हम रही नहीं उसको स्टोर ही कर नहीं सकते उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते बॉडी की एनिमल बॉडी उसको क्विक क्या करना है रिमूव्ह करणार म्हणजे आपण अमोनियाला कुसही ठेवू शकत नाहीये त्याला क्विक काय करायचं आहे रिमूव्ह करायचं आहे आपल्याला त्यातल्या त्यात मग टेरिस्ट्रियल अडॅप्टेशन झालं अमोनिया गेट कन्वर्टेड इनटू व्हॉट युरिया विच इज अ 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक दॅन अमोनिया याचा अर्थ आपण असं परसेप्शन घेतो इट मे बी स्टोअर्ड इन स्मॉल एक्सटेंट इन किडनी इसको आगे पढ़ेंगे हम किडनी टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी यानी ऑस्मोलैरिटी यानी सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए उसको कुछ मात्रा में क्या किया जाता है स्टोर किया जाता है इवन इट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन का है ब्लड फॉर स्मॉल एक्सटेंट टू मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड टू मेंटेन दी व्हाट पीएच ऑफ ब्लड आगे पढ़ेंगे हम यूरिन फॉर्मेशन में हमारे ब्लड का पीएच मेंटेन करने के लिए कुछ मात्रा में हम यूरिया और यूरिक एसिड इन स्मॉल एक्सटेंट ट्रेसेस ब्लड में क्या करते हैं स्टोर करते हैं टू मेंटेन दी व्हाट पीएच ऑफ ब्लड यानी हम उसको थोड़े समय के लिए स्टोर कर सकते हैं बॉडी में क्यों कर सकते हैं बिकॉज इट इज 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक देन अमोनिया को स्टोर कर ही नहीं सकते क्योंकि वो हाईली टॉक्सिक है हाईली कैसा है टॉक्सिक इज देयर ओके त्यानंतर बघा सोल्युबिलिटी बघा हा लेस सोल्युबल इन वॉटर है लेस सोल्युबल इन वाटर वाटर में इसकी सोल्युबिलिटी बहुत कम है भाई किसकी वेरी लेस सोल्युबल इन वाटर कौन यूरिया रेडियली सोल्युबल कौन था अमोनिया कल लिखा था हमने अमोनिया इज रेडियली सोल्युबल क्विक सोल्युबल हो जाता है पानी में डिसॉल्व इन का वाटर वेरी क्विकली रेडियली सोल्युबल है आणि that urea is a less soluble in water आणि लक्षात ठेवा for removal of
water requirement for removal of 1 gram of urea, 1 gram of urea as a nitrogenous waste, as a nitrogenous waste. अगर हमें उसको नाइट्रोजनस वेस्ट बोल के रिमूव करना है 1 ग्राम किसको, यूरिया को, इट रिक्वायर्स इट रिक्वायर्स दोस्तों 50 ml ऑफ वाटर. बघा रे 50 ml ऑफ वॉटर इज देयर. बघा किती ड्रॉप झालं वॉटर रिक्वायरमेंट. हाऊ मच वॉटर रिक्वायरमेंट इज अ काय ड्रॉप. बघा रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर कल जो हमने पढ़ा था उसमें 1 ग्राम के लिए कितना रिक्वायरमेंट है भाई, 350 टू 500 ml ऑफ वाटर. बघा कहा 350 टू 500 ml ऑफ वाटर. एंड देन फॉर रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरिया इट रिक्वायर्ड हाउ मच वाटर, 50 ml वाटर. 50 ml वाटर. तर हा लेस सोल्युबल आहे. लेस काय सोल्युबल. बट एनर्जी रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी for elimination, more energy for elimination than अमोनिया. अमोनिया से थोड़ी एनर्जी ज्यादा लगेगी. चलो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा, लेकिन एनर्जी ज्यादा लगेगी, लेकिन टॉक्सिसिटी कितनी कम होगी, 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिसिटी. यानी वाटर रिक्वायरमेंट कितना ml, 20 to 50 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाउ मच ग्राम ऑफ यूरिया, 1 ग्राम ऑफ यूरिया. 1 ग्राम ऑफ यूरिया के लिए 50 ml ही क्या चाहिए, पानी चाहिए. और टेंटेटिव एनर्जी कंटेंट थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि सोल्युबिलिटी लेस है किसमें, पानी में. इट इज लेस सोल्युबल इन वाटर इज देयर. कौन, यूरिया. यूरिया इज लेस सोल्युबल. बट टॉक्सिसिटी कम होने के कारण जब तक वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं होती उसको हम थोड़ी देर तक क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. लेकिन एनिमल कांट स्टोर दी व्हाट, अमोनिया. अमोनिया स्टोर कर सकते हैं क्या, नहीं है. सो यूरियोटेलिज्म जैसे हमने कल लिखा था भाई, हर एक मोड ऑफ एक्सक्रीशन के लिए एक एडाप्टेशन है. एडाप्टेशन, ये किसके लिए एडाप्टेशन है, इट इज एडाप्टेशन इन टेरिस्ट्रियल. एडाप्टेशन इन, ये एडाप्टेशन इसको हम प्रूव करने वाले, कल आएगा ये पॉइंट हमारे लिए. सभी एडाप्टेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, एडाप्टेशंस इन अ टेरेस्ट्रियल ऑस्मोरेगुलेटर्स. टेरेस्ट्रियल ऑस्मोरेगुलेटर्स जो वाटर एंड सॉल्ट को एक्टिवली बैलेंस करते हैं, जो वाटर एंड सॉल्ट को एक्टिवली बैलेंस करते हैं उनको हम ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं. क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर. वो टेरिस्ट्रियल ऑस्मो रेगुलेटर में ये एडाप्टेशन है, रिमूवल ऑफ द व्हाट, यूरिया. टेरिस्ट्रियल ऑस्मो रेगुलेटर, टेरिस्ट्रियल एंड मराइन वाटर. टेरिस्ट्रियल एंड मराइन वाटर. देखेंगे मराइन वाटर का क्या प्रॉब्लम है, ऑस्मो रेगुलेशन में हम डिटेल पढ़ेंगे. स्टार करके लिखा है आज, एवढंच लक्षात ठेवा. एडाप्टेशन इन टेरिस्ट्रियल एंड मराइन वॉटर ऑस्मो रेगुलेटर्स आर देयर. रिमूवल ऑफ यूरिया, रिमूवल ऑफ यूरिया. तेव्हा आता यूरिया म्हटलं की लेस टॉक्सिक, लेस सोल्युबल, मोर काय एनर्जी, ऑर्निथिन सायकल. 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक देन अमोनिया. 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक देन अमोनिया इज देयर. ओके, दैट इज यूरियोटेलिज्म. टेरिस्ट्रियल मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, कैमल. हमारा कैमल डेजर्ट शिप कहते हैं हम कैमल को, भी कोण आहे, यूरियोटेलिक ही आहे. दैट कैमल इज आल्सो यूरियोटेलिक एनिमल इज देयर. ओके, आणि आपले फ्रॉग, अडल्ट फ्रॉग, टेरिस्ट्रियल एम्फिबियन, आणि सगळे मराइन वॉटर ऑस्मोरेग्युलेटर्स. मराइन वॉटर ऑस्मोरेग्युलेटर. बघा फ्रेश वॉटर मध्ये राहायचं असेल तर अमोनिया रिमूव्ह करावा लागतो आणि मराइन वॉटर मध्ये युरिया. ते फक्त पॉइंट तुम्ही कनेक्ट करा, फक्त लक्षात ठेवा. त्याला विथ मेकॅनिझम आपण बघूया, ऑस्मो रेग्युलेशन. असं का, फ्रेश वॉटर मध्ये राहायचं असेल तर अमोनियाच का रिमूव्ह करावा लागतो, मराइन वॉटर मध्ये राहायचं असेल तर युरियाच का, अमोनिया का नाही, काय प्रॉब्लेम आहेत दोन्हीकडचे आणि त्यावर काय सोल्युशन म्हणजे अडॅप्टेशन केले ऑस्मो रेग्युलेटर्सनी आपण फाइंड आउट करू. पण टेरिस्ट्रियल एनिमल एवढं पाणी आपल्याला प्लेंटी ऑफ वॉटर अवेलेबल होऊ शकतं का, नाही. त्यासाठी बेस्ट कोण आहे, युरिया. त्यासाठी किती ml वॉटर लागतं, 50 ml ऑफ वॉटर इज रिक्वायर्ड. 50 ml ऑफ वॉटर इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ द व्हॉट, युरिया. रिमूवल ऑफ द काय, युरिया. ओके, त्यानंतर बघा अजून काही पॉइंट आहेत छान, AIPMT ला त्यांनी विचारलं होतं. बघा बघा मराइन वॉटर कार्टिलेजिनस, मराइन वॉटर कार्टिलेजिनस फिशेस, मराइन वॉटर इलॅस्मो ब्रँच. लक्षात घ्या रे, मराइन वॉटर इलॅस्मो ब्रँच. इलॅस्मो ब्रँच म्हणजेच कोणत्या फिशेस रे, कार्टिलेजिनस फिशेस. कार्टिलेजिनस फिशेस. ओके,
Marine water elasmo branch means what? Which fishes? Cartilaginous fishes. कौन से फिशेस दोस्तों? Cartilaginous fishes. Ureotelic है. They are ureotelic. Definitely they are ureotelic. पण लक्ष द्या रे. Ureotelic आहेत. काय करतात बघा. Marine water elasmo branch like cartilaginous fishes, like shark. Like the काय? Shark. Stores some amount of urea. Some amount of urea in their blood. In their काय? Blood. Some amount of urea. Please लक्ष द्या रे. महत्वाचे पॉइंट तुम्ही परत त्याच परीक्षेत चुका करता बा. इलास्मो ब्रांच. Some amount of urea in a काय? Blood and skin. Blood and skin. इसको भी प्रूव करके दूंगा मैं आगे आपको. Skin. To increase osmolarity near to marine water. Marine water. To avoid, but to minimize, avoid नहीं, to minimize water loss. To minimize water loss. Water loss by exoosmosis. हमें एक्सोऑस्मोसिस से वाटर लॉस को क्या करना है? मिनिमाइज करना है. वी वांट टू मिनिमाइज वाटर लॉस. वी वांट टू मिनिमाइज द काय? वाटर लॉस बाय प्रोसेस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस. एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस से हमें वाटर लॉस को क्या करना है भाई? मिनिमाइज करना है. दैट इज द इलास्मो ब्रांच, मराइन वाटर इलास्मो ब्रांच. कार्टिलेजिनस काय? फिशेस. खूप इंटरेस्टिंग आहे. तुम्ही इंटरेस्ट घेऊन अभ्यास करा रे. इंटरेस्ट क्रिएट करा म्हणजे तुमचं जे वाचण्याचा लोड आहे ना म्हणजे रेड्यूस होतो आणि इनडायरेक्ट टाइपचे क्वेश्चन आपण इझिली काय करू शकतो? सॉल्व्ह करू शकतो. बरं का? गाडी एकदा लक्षात द्या. मग याच्यामध्ये लक्षात घ्या ह्या प्रॉब्लेम काय बघा मराईन वॉटरचा. समजा लक्षात ठेवा हे मराईन वॉटर आहे आपलं. हे मराईन वॉटर आहे बरोबर आहे आपलं. मराईन वॉटर किंवा आपण याला असं मराईन वॉटर म्हणून हे सगळं मराईन वॉटर आहे. ओके. आता हे मराईन वॉटर मध्ये मित्रांनो मराईन वॉटर हे स्ट्रॉंगली कसं असेल रे? हायपरटोनिक आहे ना. मराईन वॉटर इज स्ट्रॉंगली हायपरटोनिक. आता एक एवढं तर तुम्ही केमिस्ट्रीत माहिती आहे तुम्हाला. हायपरटोनिक म्हणजे काय? कॉन्सन्ट्रेटेड. कारण सॉल्टची क्वांटिटी जास्त आहे. खारं असतं ना पाणी. समुद्र में पाणी बहुत है लेकिन पी नहीं सकता. बघा आपण समुद्रात खेळतात लोक पळतात पाणी पितात का गटागटा नाही. आधी तोंडात गेले की लागणार. खूप खारट असतं ते. ट्रिमेंडस काय असतं? खारट असतं. पिऊ शकतो का आपण? नाहीये. सॉल्टी वॉटर. कोणतं वॉटर आहे? सॉल्टी वॉटर. कॉल्ड ॲज द वॉट? हायपरटोनिक आहे. कोणतं वॉटर आहे? हायपरटोनिक. मग अशामध्ये एखादा जर शार्क सारखा भला मोठा फिश आहे इथं पाण्यामध्ये आपला शार्क आहे. त्या बिचाऱ्या शार्कला पाण्यामध्ये फिरत असताना सारखा प्रॉब्लेम आहे ना. सारखा प्रॉब्लेम आहे टू लूज दी काय? वॉटर बाय प्रोसेस ऑफ एक्झॉस्मोसिस. तुम्ही विचार करा ना साधं डिटर्जंट पावडर मध्ये जरी आपण आपला हात डीप केला तर आपली त्वचा काय झाली दिसती? श्रिंक होती ना ड्यू टू एक्झॉस्मोसिस. वी लूज दी वॉटर. आणि हा तर स्ट्रॉंग कशामध्ये? मराईन वॉटर मध्ये फिरतोय. कोण? शार्क. मराईन वॉटर मध्ये फिरतोय आणि गेट द प्रॉब्लेम ऑफ एक्झॉस्मोसिस. गेट द प्रॉब्लेम ऑफ एक्झॉस्मोसिस. मग हा काय करतो? मग काही अमाऊंट मध्ये तो जो आपला युरिया तयार केलेला आहे काही अमाऊंट मध्ये युरिया जो तयार झालेला आहे त्याच्या बॉडीमध्ये त्या युरियाला काही अमाऊंट मध्ये त्या युरियाला त्याच्या बॉडीमध्ये काय करतो? स्टोअर करतो. ब्लड मध्ये आणि कशामध्ये? स्किन मध्ये. ब्लड मध्ये आणि स्किन मध्ये. जेणेकरून त्या ब्लड आणि स्किनची ऑस्मोलॅरिटी ब्लड आणि स्किनची ऑस्मोलॅरिटी काय होईल? वाढेल. नियर टू ए मूर्खा नियर टू कशाला? नियर टू वॉट? विच वॉटर? मराईन वॉटर. नियर टू मराईन वॉटर आपल्याला त्याची काय वाढवायची आहे? ऑस्मोलॅरिटी. जेणेकरून ऑस्मोलॅरिटी नियर टू मराईन वॉटर नेली तर काय मिनिमाइज होईल रे? वॉटर लॉस. एक्झॉस्मॉसिस मुळे होणारा काय? वॉटर लॉस काय होऊ शकतो? मिनिमाइज होऊ शकतो. त्यामुळे मराईन वॉटर मध्ये युरिया हे अडॅप्टेशन आहे. तुम्हाला सर युरिया कशा काय फायदा झाला सांगा? कारण हा अमोनियापेक्षा 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक आहे. अमोनियापेक्षा 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक. त्यामुळे तो बॉडीमध्ये त्याला थोड्या वेळासाठी स्टोअर करू शकतो. स्किन मध्ये स्टोअर करू शकतो. जेणेकरून त्याचा वॉटर लॉस काय होईल? कंट्रोल होईल. इव्हन आपल्याला काही ऑस्मो रेग्युलेशन मध्ये टेरिस्ट्रियल अॅनिमल्स मध्ये ऑस्मो रेग्युलेशन बघायचं. त्यात मी तुम्हाला एक उदाहरण देईल. टेरिस्ट्रियल मॅमल लाईक डेझर्ट मॅमल लाईक कॅमल. आपला डेझर्ट सीप कोण आहे? कॅमल.
हमारा कैमल जो है, ऊंट बोलते हैं, त्या ऊंट में ऐसी एबिलिटी है कि अगर उसको पानी अवेलेबल नहीं है, अंडर वाटर स्टारवेशन है वो कैमल, तो वो वाटर लूज नहीं करना चाहता है, और वो क्या करता है कि जो यूरिया फॉर्म होता है बाय मेटाबॉलिक का है वेस्ट, उसको किडनी में स्टोर करके रखता है। किडनी में क्या करके रखता है? स्टोर कर सकता है। एंड जब उसको पानी अवेलेबल होता है, देन ही टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, वो 10 मिनट में 80 लीटर ऑफ वाटर ड्रिंक करता है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कैमल टू ड्रिंक हाउ मच वाटर? 80 लीटर वाटर. कितना वाटर? 80 लीटर ऑफ वॉटर विथ इन हाऊ मेनी मिनिट? 10 मिनिट. म्हणजे 10 बिस्लरीच्या बाटल्या कॅमल काय करतो? पिऊन घेतो. किती मिनिटामध्ये? 10. आणि रिमेन रिहायड्रेटेड फॉर हाऊ मेनी मंथ? 1 मंथ. 1 महिना परत पाणी पित नाही. मग अशा वेळेस त्याला ज्यावेळेस पाणी मिळतं त्यावेळेस तो युरिया काय करून टाकतो? रिमूव्ह करून टाकतो. तेच जर अमोनिया राहिला असता तर कॅमल जिवंत राहिला असता का? नाही. सर्वाइव्ह झाला नसता एवढ्या टॉक्सिसिटी मध्ये, कधीचाच गेला असता. पण युरियामुळे काय झालंय? पॉसिबल आहे. त्यामुळे पाण्याच्या अवेलेबिलिटी नुसार काय ठरलेले आहेत रे? मोड्स ऑफ एक्सक्रिशन. मोड्स ऑफ एक्सक्रिशन डिपेंड्स अपॉन, प्लीज लक्ष दे रे, मोड्स ऑफ एक्सक्रिशन डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर. मोड्स ऑफ एक्सक्रिशन डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर. आणि याचा फायदा त्या शार्कला सुद्धा झाला की अमोनिया असला तर शार्क मेलत असता. अमोनियापेक्षा काय बरं आहे मग? युरिया. डेंजरस आहे, पण त्यातल्या त्यात 1 लाख टाइम कसं आहे? लेस टॉक्सिक आहे. कोणापेक्षा? अमोनिया. त्यामुळे काही मात्रामध्ये तो स्किन मध्ये, बॉडी ब्लड मध्ये काय करू शकतो? स्टोअर, टू मिनिमाइज दी वॉटर लॉस. टू मिनिमाइज दी काय? वॉटर लॉस. म्हणजे शार्क स्टोअर दी सम अमाउंट ऑफ युरिया इन द ब्लड अँड स्किन टू इन्क्रीज दी ऑस्मोलॅरिटी नियर टू मराईन वॉटर टू मिनिमाइज दी वॉटर लॉस बाय एक्झो ऑस्मॉसिस. ह्या प्रकाराला बघा, एनी ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, बघा, व्हेन एनी, एक नवीन पॉइंट सांगतो तुम्हाला, व्हेन एनी ऑर्गॅनिक कंपाऊंड used to increase osmolarity, काय? ऑस्मोलॅरिटी, नोन एज, उसको ऑस्मोलाइट कहते हैं मित्रों. इट इज नोन एज दी व्हॉट? ऑस्मोलाइट. काय म्हणायचं त्याला? ऑस्मोलाइट. मला सांगा, युरिया इनऑर्गॅनिक आहे का ऑर्गॅनिक आहे? ऑर्गॅनिक है. यूरिया इज अ व्हाट? ऑर्गेनिक है. यूरिया इज अ ऑर्गेनिक है. और एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ऑस्मोलैरिटी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाने के लिए यूज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोलाइट. क्या कहते हैं? ऑस्मोलाइट. असा एखादा शब्द ऑप्शन मध्ये दिसला तुम्हाला एमसीक्यू सॉल्व करत असताना, तर एकदम पॅनिक होण्याची गरज नाही. ऑस्मोलाइट म्हणजेच कोण? ऑर्गेनिक कंपाउंड. आणि इथे ऑस्मोलाइट म्हणून या फिशेसने कोणाचा यूज केला रे? युरियाचा. या फिशेस यूजेस दी व्हाट? यूरिया. फिशेस ने यहाँ पे यूरिया का यूज किया है एज अ व्हाट? ऑस्मोलाइट. एज अ व्हाट? ऑस्मोलाइट इज देयर. इज इट क्लियर? ऑस्मोलाइट बोल के यूरिया का क्या हो गया है? यूज हो गया है. लक्षात राहील तुमच्या? अमोनोटेलिझम आणि युरियोटेलिझम हे कोणासाठी अडॅप्टेशन आहे? टेरिस्ट्रियल आणि मराईन वॉटर ऑस्मोरेग्युलेटर. टेरिस्ट्रियल आणि काय? मराईन वॉटर ऑस्मोरेग्युलेटर इज देयर. ओके, इज इट क्लियर? लक्षात तुमच्या झालं इथपर्यंत सगळ्यांचं? ओके. त्यानंतर बघा, अ पर्सन, ह्युमन बिंग साठी एक पॉइंट सांगतो बघा, याचं कारण मला उद्या सांगा. अ पर्सन who ate more protein rich diet, protein rich diet or starved person, okay, will excrete more urea from urine. Urea from काय? urine. Will excrete more urea from the काय? urine. urine से ज्यादा यूरिया को क्या करता है? एक्सक्रीट करता है. बघा, एखादा पर्सन, आता पर्सन कोण घ्यायचा आहे? ह्युमन घ्यायचा आहे बरं का. कोण येते? ह्युमन. जर आपण समजा जास्त प्रोटीन रिच डाएट, काल सांगितलं तुम्हाला की नायट्रोजनस वेस्टचा सोर्स कोण आहे रे? पटकन सांगा. व्हॉट इज द सोर्स ऑफ नायट्रोजनस वेस्ट? प्रोटीनचा कॅटाबॉलिझम. लक्ष द्या, कॅटाबॉलिझम ऑफ प्रोटीन. कॅटाबॉलिझम ऑफ प्रोटीन इज द सोर्स ऑफ नायट्रोजनस वेस्ट. इज नायट्रोजनस वेस्ट का सोर्स कोण आहे? कॅटाबॉलिझम ऑफ प्रोटीन. मग आता प्रोटीन जास्त खाल्लं तुम्ही समजा, तर जास्त कॅटाबॉलिझम होणार, आणि जब जास्त कैटाबॉलिज्म हो गया तो ज्यादा क्या फॉर्म होगा? यूरिया फॉर्म होगा. ये तो समझता है ना आपको? जितना ज्यादा आप क्या खाओगे? प्रोटीन रिच डाइट. जितना प्रोटीन रिच डाइट आप कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा यूरिया की क्वांटिटी ब्लड में बढ़ जाएगी. उसके लिए उसका ऑक्सीडेशन हो, सॉरी, उसका कैटाबॉलिज्म होगा. क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा. लेकिन मित्रों,
अगर आप स्टार सचमुच उपास करताय, तुम्ही खरंच उपाशी आहे, तुम्हाला मग असा उपास का साबुदाणा खाऊन, शेंगदाणे खाऊन, लाडू खाऊन असा उपास करायचा आहे का नाहीये? म्हणजे खरोखर उपाशी आहेत आपण, म्हणजे आता उपाशी म्हणजे आपण अन्न नाहीये, तर मग बॉडी सगळ्यात पहिले कार्बोहायड्रेट यूज करून घेते. मी सांगेल तुम्हाला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के कॉन्सेप्ट में हम आगे देखेंगे. सगळ्यात पहिले काय यूज करेल? कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट्स एंड लिपिड, और उसके बाद तीसरा नंबर किसके ऊपर आता है? प्रोटीन. जब प्रोटीन का नंबर आता है तो यूरिन में एरिया का एक्सक्रीशन क्या होता है? बढ़ जाता है, और वो लास्ट स्टेप है, और वो भी खत्म हो गए, वी कांट सर्वाइव. वी कांट का है सर्वाइव. उसके बाद हम भूखे रह सकते हैं क्या? नहीं है. तो दोनों अपोजिट है, ज्यादा प्रोटीन खाओगे या ज्यादा भूखा रहोगे. रियल भूखा, रियल का है भूखा. क्वांटिटी ऑफ यूरिया इन यूरिन विल का है? इंक्रीजेस. क्वांटिटी ऑफ यूरिया इन यूरिन विल इंक्रीजेस. इज देयर. ओके, दॅट इज अ युरियोटेलिझम. दॅट इज अ काय? युरियोटेलिझम. इकडे लक्ष द्या रे प्लीज. आता काही प्रश्न आहेत बघायला. काही जण ड्युअल एक्सक्रीशन दाखवतात. EIPMT ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में टारगेट किए थे. थोडं लक्ष द्या प्लीज, लक्ष द्या. ड्युअल एक्सक्रीशन आहेत बघा, ड्युअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन. फार मजेशीर एक्झाम्पल आहेत, लक्षात ठेवा. दोन आपण जे वर बघितलंय, ड्युअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन. यस, हमारे कुछ एनिमल्स है भाई जो ड्युअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन दिखाते हैं. दे आर नोन टू शो विच मोड ऑफ एक्सक्रीशन? ड्युअल मोड ऑफ. लक्ष द्या प्लीज, ते बघतील ते मलाच बोलतील बरं का. बघा, ड्युअल मोड ऑफ दी काय? एक्सक्रीशन. ड्युअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज देयर. त्यात नंबर 1 ड्युअल मोड साठी आपल्या समोर येतोय, दिल थांब के बैठिए, अर्थवर्म. कौन से फाइलम का बिलोंग करता है बेचारा? एनेलिडा. बिलोंग फ्रॉम द फाइलम एनेलिडा इज देयर. अर्थवर्म द फ्रेंड ऑफ फार्मर. द फ्रेंड ऑफ द काय? फार्मर इज देयर. मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी. अब देखो, जब इस अर्थवर्म को, अर्थवर्म एक लक्ष द्या, काही अॅनिमल्सच आहेत ते ड्युअल मोड, काही लार्वाच आहेत ते ड्युअल मोड दाखवतात, बाकीचे एकच मोड दाखवतात. त्यामुळे इकडे तिकडे जाऊ शकतो का आपण? नाही. बघा, अर्थवर्म इज अमोनोटेलिक. अमोनोटेलिक. हमारा अर्थवर्म अमोनोटेलिक भी है. कब अमोनोटेलिक है? व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल. प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल इन सॉइल, यानी सॉइल इज वेल सॅच्युरेटेड विथ काय? वॉटर. जिस जमीन में पाणी, आता मला अर्थवर्म कुठं मूव करतो? सॉइल मधून मूव करतो. फ्रॅक डेट्रीवर येतो, सारखं खात राहतो डेट्रिटियस मटेरियल, खात राहतो, कर 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 आणि मूव करत राहतो. मग अशा वेळेस सॉइल मध्ये मॉइश्चर बऱ्यापैकी आहे. प्लेंटी ऑफ वॉटर म्हणजे काय? प्लेंटी ऑफ वॉटर म्हणजे मॉइश्चर अवेलेबल इन सॉइल. म्हणजे ऍक्च्युअली प्लेंटी ऑफ वॉटर म्हणजेच काय म्हणतो आपण त्याला? मॉइश्चर अवेलेबल इन सॉइल. त्यावेळेस त्याला पाण्याची कॉन्झर्व करण्याची गरज नाहीये. अशा वेळेस हा अर्थवर्म काय रिमूव्ह करतो रे? अमोनिया. काय रिमूव्ह करतो? अमोनिया. आणि काय होतो? अमोनोटेलिक. काय असतो तो? अमोनोटेलिक. सेम अर्थवर्म also become ureotelic in when plenty of water is not available. Plenty of water is not available. Plenty of water is not available. जब plenty of water available नहीं है, plenty म्हणजे ज्यादा क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल नहीं है. When more water is not available, more water is not काय? Available is there. तो काय होऊन जातो? चुपचाप युरियोटेलिक. पाणी आले की परत अमनोटेलिक, पाणी गेले की परत युरियोटेलिक. म्हणजे मोड मध्ये काय होत राहतो? चेंज. देयर इज अ चेंज इन अ काय? मोड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर इज देयर. म्हणजे ड्युअल मोड म्हणून आपण त्याला. नंतर अजून एक ड्युअल मोड वाला आहे बघा. यस, लंग फिशेस. लंग फिशेस. ओके, लंग फिशेस. देखिए हमारे लंग फिशेस अगेन अमनोटेलिक. 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 When plenty of water is काय? Available. अमनोटेलिक. काय असतात त्या? अमनोटेलिक असतात बघा. In water is काय? Available. When water is काय? Available is there. When plenty of water available. ज्यावेळेस when in water. When in काय? Plenty of water. आणि सेम बघा become ureotelic. यूरियोटेलिक कब होते हैं? ड्यूरिंग, शाबाश, ड्यूरिंग एस्टिवेशन. बघा इथे एस्टिवेशन म्हणजे कॅलिक्स आणि करोलाची अरेंजमेंट आहे का? नाही. हियर एस्टिवेशन म्हणजे कोणती स्लीप रे? शाबाश. हियर एस्टिवेशन मीन्स विच स्लीप? समर स्लीप. इसको हम समर स्लीप कहते हैं. डोंट गेट कंफ्यूज. वो एस्टिवेशन है विद रिस्पेक्ट टू कैलिक्स एंड करोला इन बर्ड कंडीशन. इन काय? बर्ड. वो अरेंजमेंट देखिए हमने.
ही ऍक्टिव्हेशन कोणती स्लीप आहे? समर स्लीप. आणि समर मध्ये वॉटरची अवेलेबिलिटी कशी असेल? कमी असेल. इन समर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज लेस, और जब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लेस होती है दोस्तों, वो क्या बन जाता है? यूरियोटेलिक. क्या बन जाता है? यूरियोटेलिक. आणि ज्यावेळेस पाण्यात असतील, पाणी अवेलेबल असेल, त्यावेळेस कसे असतील? अमोनोटेलिक. काय असतील? अमोनोटेलिक. पॉन्ड मध्ये बऱ्यापैकी पाणी असेल, पावसाळ्याचं म्हणजे रेनी सीझन मध्ये बऱ्यापैकी पाणी असेल, अशाच पाणी त्या डबक्यातलं कमी व्हायला लागलं की ते अंडरगो विच प्रोसेस? ऍक्टिव्हेशन अँड बिकम दी व्हॉट? यूरियोटेलिक. बिकम दी व्हॉट? यूरियोटेलिक. देन थर्ड एग्जाम्पल लेंगे, क्रोकोडाइल. 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 बघा, एक क्रोकोडाइल, एक क्रोकोडाइल जब पानी में है तो क्या बन जाती है? अमोनोटेलिक. अमोनोटेलिक. वेन इन वाटर, वेन इन का वाटर, पानी के बाहर ज्यादा नहीं आ रही है, थोड़ा बाहर आ रही है, फिर पानी में जा रही है, पानी में जा रही है, फिर थोड़ा बाहर आ रही है, फिर पानी में जा रही है, तो क्या रहती है? अमोनोटेलिक. एंड अगेन ये भी भाई हमारी क्रोकोडाइल क्या हो जाती है? यूरियोटेलिक. वेन अवे फ्रॉम वाटर, अवे फ्रॉम वाटर फॉर मेनी डेज, वाटर फॉर मेनी डेज. अगर बहुत ज्यादा दिनों के लिए पानी के बाहर निकल गई, पानी के बाहर निकल गई, तो समझ लेना क्या बन जाती है? यूरियोटेलिक. आणि पाण्यातच आहे, पाण्यातच आहे, थोड्या वेळ ती परत पाण्यात, परत पाण्यात, मग कोण होती? अमोनोटेलिक. आपको याद है एक जाहिरात आती थी काजोल की, अल्पेन लिबे होती, बरोबर आहे का? अल्पेन लिबे. आणि बरोबर आहे, तुम्ही त्यावेळेस लहान असताल, अजून थोडे आठवत आहे की नाही मला माहित नाही, मग त्यात असं दाखवलंय किंवा ती क्रोकोडाईलला इतकी आवडती अल्पेन लिबे की ती पाण्यातून लोकांच्या घरात ते चॉकलेट खायला जाते. आता ज्यावेळेस ती घरात जाईल लोकांच्या फिरायला, त्यावेळेस ती काय असेल रे भाऊ? यूरियोटेलिक. आणि परत पाण्यात वापस गेली, पाण्यात काय गेली? वापस, तर काय होऊन जाईल? अमोनोटेलिक. म्हणजे ड्युएल मोड आहेत. कोणते मोड्स आहेत? ड्युएल मोड इज देअर. ओके, हे काही अॅनिमल्स आहेत. दीज आर द सम अडल्ट एनिमल. नुसते एनिमल नाहीत, अडल्ट एनिमल आहेत. कारण हमें ये तो पता है लार्वा मोड चेंज करते हैं ना, लार्वा बिफोर मेटामॉर्फोसिस एक मोड ऑफ एक्सक्रीशन दिखाती है, मेटामॉर्फोसिस के बाद अडल्ट बन जाती है. जैसे फ्रॉग, पानी में भी जाओ और जमीन में भी रहो, क्या रहता है? यूरियोटेलिक. पण त्याची लार्वा कशी आहे? अमोनोटेलिक. म्हणजे लार्वा टू अडल्ट, लार्वा टू अडल्ट, ये मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया है. लेकिन ये अडल्ट एनिमल ही है, कौन से? अर्थवर्म, लंग फिशेस आणि कोण? क्रोकोडाइल. यानी वो अडल्ट होके भी डुअल मोड दिखाते हैं. जब प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल होता है तो दे आर अमोनोटेलिक, और जब वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो दे बिकम यूरियोटेलिक. दे बिकम दी व्हाट? यूरियोटेलिक. लक्षात तुमच्या? दिस इज द अगेन वन मोड ऑफ दी काय? एक्सक्रीशन, that is called as urea, where nitrogenous waste is removed in the form of the what? Urea. आणि आता तिसरा आणि शेवटचा बघू आपण, द थर्ड मोड. कोणता आहे भाऊ थर्ड मोड? यूरिकोटेलिज्म. यूरिकोटेलिज्म देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे एंड देन एडाप्टेशन वगैरह कर लेंगे. यूरिकोटेलिज्म सांगा, द रिमूवल ऑफ द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन विच, सांगा, इन विच नाइट्रोजनस वेस्ट, nitrogenous waste is removed, nitrogenous waste is removed in the form of, shabash, removed in the form of uric acid. In the form of the which acid is there? Uric acid. जिनमें नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो रही है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड. पहला कौन किसके फॉर्म में गई थी? अमोनिया. दूसरा कौन है? यूरिया. एंड द थर्ड वन इज यूरिक एसिड. तो हमने कल देखा, these are the three main type of nitrogenous waste, which are the ammonia, urea, uric acid. Ammonia, urea, uric acid. Here removed in the form of uric acid, known as यूरिकोटेलिज्म. यस, इसको ही हम क्या कहेंगे? यूरिकोटेलिज्म. यूरिकोटेलिज्म. ओके. एंड सच animals are known as uricotelic animals. Animals are known as uricotelic animals. यूरिकोटेलिक एनिमल्स, इनको हम यूरिकोटेलिक एनिमल, जैसा अमोनोटेलिज्म अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिज्म यूरियोटेलिक, वैसा ही यूरिकोटेलिज्म यूरिकोटेलिक. यूरिकोटेलिक इज देयर. एंड अगर इसके एग्जाम्पल लेंगे मित्रों तो कौन है भाई हमारे? टेरिस्ट्रियल, टेरिस्ट्रियल और लैंड इंसेक्ट्स. लैंड का है इंसेक्ट्स. ओके. टेरिस्ट्रियल रेप्टाइल्स, terrestrial reptiles and birds.
एटसेट्रा, इंसेक्ट होगा टेरिस्ट्रियल, इंसेक्ट, रेप्टाइल, बर्ड्स, एटसेट्रा, टेरिस्ट्रियल स्नेल, लैंड स्नेल हमारी, लैंड काय स्नेल, ओके, एटसेट्रा. एनसीईआरटी मध्ये दिलेले एक्झाम्पल आहे. आर युरिकोटेलिक. कोणते अॅनिमल्स आहे? युरिकोटेलिक अॅनिमल्स. ओके, युरिकोटेलिक अॅनिमल्स. आता बघा, युरिकोटेलिक अॅनिमल्स मध्ये फॉर्मेशन ऑफ युरिक ऍसिड, फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड किससे होता है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड इज बाय विच पाथवे? आयनोसाइनिक पाथवे. आयनोसाइनिक पाथवे है फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड, फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड. और इस बार जो 2022 का हमारा नीट एग्जाम्पल हुआ था जुलाई में, इसमें क्वेश्चन आया था, लास्ट लाइन हुआ एनसीईआरटी के पहला पेज वाली, दैट इज कॉल्ड आयनोसाइनिक पाथवे. कौन सा पाथवे? आयनोसाइनिक पाथवे. जैसे डिअमायनेशन म्हटलं की अमोनिया, डिअमायनेशन म्हटलं की अमोनिया, ऑर्निथिन सायकल म्हटलं की युरिया, ऑर्निथिन सायकल म्हटलं की युरिया, आणि आयनोसाइनिक पाथवे म्हणले कोण आहे? युरिक ऍसिड. कोण आहे? युरिक ऍसिड. आणि लक्षात ठेवा मित्रांनो, uric acid is least toxic type of nitrogenous waste. Least toxic type of nitrogenous waste. म्हणजे सगळ्यात कमी टॉक्सिक तिघांमध्ये, तीनों में से सबसे कम टॉक्सिक, तीनों में से सबसे कम टॉक्सिक कौन है मित्रों? यूरिक एसिड. सबसे धोखादायक अमोनिया, उससे 1 लाख टाइम यूरिया, उससे भी कौन है? यूरिक एसिड. त्यामुळे लीस्ट टॉक्सिक टाइप ऑफ नाइट्रोजन, वो भी निकालेंगे वैसा क्वेश्चन. डिक्रीजिंग टॉक्सिसिटी, नंबर 1 कौन रहेगा? अमोनिया. ग्रेटर देन यूरिया, यूरिया ग्रेटर देन यूरिक एसिड. यानी लीस्ट टॉक्सिक कौन आएगा फिर? यूरिक एसिड. लिस्ट में सगळ्यात कमी टॉक्सिक कोण येईल? यूरिक एसिड इज द लिस्ट टॉक्सिक टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज देयर, विच इज अ रिमूव. विच इज अ काय? रिमूव. आणि लक्षात ठेवा, रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड, रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड, त्यासाठी आपण पुढे जाऊया त्याला असं म्हणू, यूरिक एसिड लिस्ट सोल्युबल इन वॉटर, सोल्युबल इन वॉटर. ओके. आणि रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड, रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड, removal of uric acid requires negligible or no water, negligible or the what? No water. एकदम negligible किंवा काय? No water. एकदम negligible or the what? No water. एकदम negligible or the what? No water. एकदम negligible किंवा काय असेल? No water is there. Okay. For example, that is for removal of 1 gram of uric acid, no or 10 ml water required. 10 ml water required. No or 10 ml. म्हणजे अजिबात पाणी नसलं तरी चालेल. लक्ष द्या इकडे. No or negligible water. No or the what? Negligible water is required. म्हणजे अजिबात पाणी नसलं तरीही चालेल. पानी नसलं तरी चालेल. फॉर रिमूवल ऑफ विच एसिड? यूरिक एसिड. अगर हमें यूरिक एसिड का रिमूवल करना है नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि इसकी सोलिबिलिटी बहुत लिस्ट है वाने में. भाई तुमच्या लक्षात आलं का? As we move from ammonia to uric acid, लक्ष द्या, जनरल सेन्स लावा, आपण त्याचा एक चार्ट बनवूया नेक्स्ट लेक्चर मध्ये. As we move from ammonia to uric acid, भाई हम अमोनिया से यूरिक एसिड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो टॉक्सिसिटी डिक्रीजेस, टॉक्सिसिटी, solubility decreases, water requirement decreases, but energy requirement increases. Energy requirement increases. कारण पाणी वाचवलंय पण एनर्जी लागेल, त्यामुळे त्या रिमोलला जनरली रिमोल required maximum energy. Removal of uric acid as a nitrogenous waste for this animal required maximum energy. मैक्सिमम क्या चाहिए उसको भाई?
एनर्जी चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी। आणि रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड, ये भी लाइन 2-3 बार एग्जाम में आ चुकी है। रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड is an adaptation for conservation of water, adaptation for conservation of water। पानी के कॉन्जर्वेशन के लिए क्या है भाई, ये एडेप्टेशन, पानी कॉन्झर्व करण्यासाठी, फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ वॉटर। कारण जर पाणीच अवेलेबल नसेल, पाणीच काय नाहीये, अवेलेबल नाहीये, तर मग लूज करायला जमेल का, नाही, म्हणजे कॉन्झर्वेशन ऑफ वॉटर। आता मला सांगा, बर्ड्स अवे फ्रॉम वॉटर आहेत ना, त्यांना एवढं प्लेंटी ऑफ वॉटर सहज मिळणार आहे का बर्ड्सला? ऍक्वॅटिक बर्ड सोडून द्या, सगळ्या बर्ड्सला मिळेल का? नाही। टेरिस्ट्रियल रेप्टाइल, तुमचं लिझार्ड असेल किंवा स्नेक्स असतील, दर ऑलवेज अवे फ्रॉम दी वॉटर, पाण्यापासून खूप दूर आहेत ना ते, पाण्यापासून खूप दूर आहेत। जे काही पाणी त्यांच्या बॉडीमध्ये, त्यांना काय करायचंय, कॉन्झर्व करायचं। काय करायचंय, कॉन्झर्व। म्हणून ते काय रिमूव्ह करतात, यूरिक एसिड। अगर आपको वाटर कॉन्झर्व करना है तो आपके लिए बेस्ट मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या रहेगा, यूरिकोटिलिज्म। बेस्ट मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या रहेगा, यूरिक। और क्वेश्चन क्या था, इट इज अ रिमूव, म्हणजे यूरिक एसिड इज अ रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और क्रिस्टल्स, पैलेट और द व्हाट, क्रिस्टल्स। यानी इट इज अ रिमूव इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और सेमी सॉलिड वेस्ट, सेमी सॉलिड वेस्ट, सॉलिड और सेमी सॉलिड वेस्ट इज देयर। त्यामुळे बघा ना, आप लोग बन ठन के निकलते हो और एखादे पेड़ के नीचे खड़े रहते हो, रेलवे स्टेशन वहां पे गेट के ऊपर, और अचानक से एक पक्षी ऊपर से पेस्ट आपके आंख पे डाल देता है। वो पेस्ट कौन है भाई, यूरिक एसिड है। कौन है वो, यूरिक, क्लोका से रिमूव होता है। और उसमें जो व्हाइट कलर का पार्ट रहता है वो कौन रहता है, यूरिक एसिड। तो लेंड्या म्हणतो आपण, बरोबर, पालीच्या लेंड्या असतात ना, लेंड्या बघतात तुम्ही, अशा पडलेल्या असतात काळ्या रंगाच्या, त्याच्यावर एक व्हाईट कलरचा डॉट असतो, तो व्हाईट कलरचा डॉट म्हणजे कोणता ऍसिड आहे, युरिक ऍसिड। तो व्हाईट कलरचा डॉट म्हणजे कोण आहे, युरिक ऍसिड इज देयर। द व्हाईट कलर डॉट इज कॉल्ड ॲट युरिक ऍसिड इज देयर। सो हे अडॅप्टेशन आहे, फॉर विच पर्पज, कॉन्झर्वेशन, फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ द काय, वॉटर, वॉटरच्या कॉन्झर्वेशन साठी काय केलेलं आहे, अडॅप्टेशन। आपण इथपर्यंत आलेलो आहे, पुढे बघूया आपण नेक्स्ट लेक्चर। ठीक आहे, एक स्लाइड मागे जाऊ। हा बघा, क्लिअर झालं, तिन्ही मोड लक्ष झाले का? मेन मोड किती आहेत, 3, अमोनोटेलिझम, युरियोटेलिझम, युरिकोटेलिझम। अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर, हा सेजल मरून जाणार, कारण मराईन वॉटर वाल्या कोण आहेत, युरियोटेलिक, आणि फ्रेश वॉटर मध्ये राहण्यासाठी अमोनोटेलिक। त्यामुळे उद्याचं लेक्चर बघा, पुढचं लेक्चर आपल्यासाठी अतिशय महत्वाचं राहणार आहे। त्यामध्ये आपण कॉन्सेप्ट ऑफ काय शिकणार आहेत, ऑस्मो रेग्युलेशन, आपण का युरियोटेलिक आहेत, का अॅनिमल अमोनोटेलिक आहेत, का युरिकोटेलिक आहेत, हे आपल्याला लक्षात येईल। ठीक आहे, राईट, इथपर्यंत झालं का सगळ्यांचं? ओके, हा ते व्हॉट्सअप पाठवून देऊ तुम्हाला, व्हॉट्सअप पाठवून देतो, सांगतो त्यांना पाठवायचं, चालेल? नाही पाठवत काय, पाठवायला सांगतो मी त्यांना, आय विल टोल। ओके, थँक्यू बॉयज, थँक्यू डिअर